guys, what's up you all? Welcome back to my channel and you're watching me, Tanuja, and today on our channel we have a guest. Hi bestie! Hi! Finally, it's my YouTube debut on my channel. I'm so excited! For those of you who don't know, meet Vanshika Shekhawat. She is a creative friend that I met online on Instagram. And then we figured that we both live in the same city. We met in 2022 and our bond has grown ever since then. She is UI UX designer. Ma'am is very educated, I'm telling you. She's very talented. She's also a content creator. She does makeup, beauty, lifestyle and all the good stuff. You guys can go follow her. Everything will be mentioned in the description box below and on the screen as well. But coming back to today's video. क्या कर रहे हैं हम आज? आज हम कर रहे हैं, we're doing a 2022 wrap, everything that we have learned, how we have grown, good, bad, ugly. So we're gonna just discuss about it, and I think it's gonna be a really fun and informative video. And I think हमें पूरा एक cycle दिखेगा कि हम लोगों ने क्या किया है. हाँ, हम ऐसे look back करेंगे पूरे साल पे. More of like a 2022 recap. रिव्यू ऐसे करके, मतलब हम 15 सेकंड की रील से आगे बढ़ के ये 30 मिनट की वीडियो करना चाहते हैं. एग्जैक्टली, लाइक इट्स हाई टाइम कि हमें कर लेना चाहिए. हाई टाइम. हम आज की वीडियो शुरू करते हैं. विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. 1 2 3 फक इट. Okay guys, so this is going to be a chatty video, more of like तुम ऐसे चला के भी छोड़ सकते हो उसको, ठीक है? But the first thing that I want to ask you is, if you have to describe 2022 in one word, how will you describe it? Like one word for 2022. Bitch. Yeah, that is the word. Bitch. 2022 was a bitch to me because a lot of things happened when the year started in my family. It was quite difficult for me to take it, and she knows about it. But हम अपनी पर्सनल लाइफ इतना खुल के नहीं बताते हैं, but things happen. We don't talk about it, but obviously we learn through all these things. But then I became friends with her, we met, and I think this girl has changed my entire life, my entire 2022. She's like the most strongest and educated, talented women that I've come across on this platform, and who's so grounded also. I've learned so much from her, and if I could just say, I think she has made my 2022 a lot better. Thank you so much. The feeling is likewise. And like all of you have seen my friends on my channel. मोनिका बहुत बार आ चुकी है, विकास आ चुका है. Mainly ये 2 लोग आए हैं और बाकी मेरे friends इतने नहीं आए. But with Vanshika it was like, मैं हूँ नहीं वैसे इतनी जल्दी ना, मैं ऐसे किसी को अपने इनर सर्कल टाइप में, like I'm a nice friendly person, but मेरा एक बहुत वो है कि ठीक है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग सर्कल है और उतने ही लोग हैं. बट विद हर इट वाज जस्ट सो नेचुरल, एंड आई थिंक हमें अडल्ट फ्रेंडशिप्स पे अलग ही एपिसोड करना पड़ेगा है. Exactly. बट विद हर इट वाज जस्ट लाइक नेचुरल, ऐसे एकदम क्लिक हुआ मेरा. तो अच्छा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इसको जान के. शी हैज इंस्पायर्ड मी इन वेज आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स, बट शी हैज बिन देयर विद मी. लाइक शी सेड, मेरे भी बहुत लोज आए. अच्छा, मैंने क्या डिफाइन किया अपने 2022 को? इट वाज chaotic. I feel like chaotic. बहुत ही कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, बहुत सारी बुरी चीजें भी हुई कि मैं इसको अच्छा भी नहीं बोल सकती, मैं बुरा भी नहीं बोल सकती. बट इट वाज ओके, मतलब yeah, it was chaotic and Exactly. I think हमने बहुत कुछ achieve किया है 2022 में. Like both of us, we have grown, we have bought things that we always wanted. I think it was मतलब when God gives you bad things, अच्छी चीजें भी ऑटोमेटिकली आती है. तो हमें ना उस चीज पे थोड़ा सा we need to be faithful कि आज बुरा दिन है तो कल नहीं होगा, कल ऑटोमेटिकली अच्छे दिन आएगा ही आएगा. वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. हमें कैसे बैलेंस करना है. मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम अच्छी चीजों को हम उतना एक्नॉलेज नहीं करते जितना हम बुरी चीजों करते हैं. मतलब पहले छोटे होते मुझे लगता था कोई भी मेरी खुशी होती थी वो 2 दिन तो लास्ट करती थी. नाउ इट हैज कम डाउन टू 2 घंटे कि कुछ अच्छा हुआ, 2 hours 2 घंटे बाद आई एम बैक टू sulking and thinking about other things that are not happening in my life. But I think that is adulting. अब हम बड़े हो रहे हैं. हमारा अब वो बहुत अलग हो गया था. I met her at the lowest of my life, where I gave up on friendship. Like I was like, I don't fucking need new friends. I'm just done with. बिल्कुल done. मतलब मैं यहाँ थी कि भाई I don't have that energy to make a bond with anybody from start and tell them what are my likes and dislikes. But with this person, it just melted down. वो बिल्कुल सब एक तरीके से absorb natural. Efforts नहीं करने पड़े. I would just say कि बहुत effortless friendship थी. और जब effortless friendship होती है तो I think
वो ज्यादा टाइम तक लास्ट भी समझते हो कि हाँ यार मतलब मुझे खुद को सरप्राइजिंग फील होता था कभी कभी कि यार मैं मतलब एक बंदे से इतना कनेक्ट करूँ इतना, वो मुझे खुद लगता था कि अच्छा I was obsessed with her. I'm still obsessed with her. Like I've been her biggest stalker. I've been her biggest stalker, and guys, I'm not even kidding. I used to text her, "I love you" videos. I love this. I think I've been her biggest OG admirer, fan. OG fan, like literally OG fan. I used to manifest my friendship with this person, and I'm not even fucking lying right now on this platform. कि मैं भी कभी इसके YouTube channel पे जाऊँगी, मैं भी कभी इसके अंदर रील बनाऊँगी, and it's just been that bond with her. It's like unbelievable जब ऐसे कुछ बोलती है, but then I realize मैंने हाँ यार मैंने हम फर्स्ट मीटिंग स्टोरी बताते छोटी सी। हाँ। तो हमने डिसाइड किया कि हम मिलेंगे, फिर हमें कैब, पहले मैं इसके घर गई, मानोगे शी बॉट लाइक इसने अपने चैनल पे वो ब्लॉग डाला है, आई वुड बी लिंकिंग दैट समवेयर, बट शी गॉट गिफ्ट्स, भाई इसने गुडी बैग बना हुआ पूरा, एंड हर मॉम वाज टेलिंग अस कि आज तो हमारे घर इन्फ्लुएंसर शी वाज लाइक द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर फ्रेंड लाइक मोनिका तो हमारे घर इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, और मैं सोच रही मैंने कि ये ऐसे क्यों हम लोग कर रहे हैं, मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ। बट फिर भाई हम गए, इट वॉज वेरी नाइस, बट देन आई थिंक उसके बाद इतना नेचुरल था। आधे टाइम मैं इसके घर पे पड़ी होती हूँ, मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं कि उसी के घर रह ले, बस चले जाओ, एंड आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, आवर फ्रेंडशिप इज जस्ट प्योर, Touchwood. ऑन द फेस, टचवुड, इट्स जस्ट सो natural, हमें कुछ pretend नहीं करना पड़ता, we just say things as it is. it's just you know, touchwood, a beautiful मजा part. आता है। ये Biggest achievement in 2022. So my biggest achievement for 2022 was like, I think I bought my MacBook, which was a very big achievement. काफी टाइम से मेरे bucket list पे था कि चाहिए, and it has made my life easier. ठीक है। Another thing जो मुझे लगती है कि as a person, जो मैं 1st Jan को थी और जो आज it's 30th December that I'm shooting today, 2 different persons. एक बहुत ही ज़्यादा लो पॉइंट था इस साल, मुझे लगता है कि आई हैव बीन एट माई लोएस्ट, मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा लो, लाइक ऐसा लो जहाँ से लगता है कि निकल ही नहीं सकती मैं, तो वो वाला लो। एंड वहाँ से नाउ दैट आई हैव ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट एंड सिटिंग राइट हियर इन दिस मोमेंट, आई फील लाइक वो कर लिया तो आई थिंक आई कैन डू एनीथिंग, Trust me, आई थिंक एनीथिंग, उससे बहुत स्ट्रेंथ ऐसे फील होती है। So yeah, that was my best. What was your biggest achievement this year? I would just say that when you go through a lot of personal stuff in your life, it's a personal relationship or a friendship or your family, mess, you just become the strongest version of yourself. आपको खुद नहीं पता होता कि आपके अंदर कितनी strength भरी हुई है, मतलब if you can go through that, you can just go through anything in your life. And I would just say कि as she just stated कि जो हम 1st Jan को थे 2021 में, I think हम वो बिल्कुल भी नहीं है इस पॉइंट पे। It's not like कि हम बुरे इंसान बन गए, हम बहुत बेटर इंसान बन गए और खुद के लिए बने, हम किसी और के लिए नहीं बने। I think पहले हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते थे, जैसे यार उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, यार मैं ये करूँ वो करूँ। नाउ आई थिंक सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे आई थिंक बहुत सालों बाद अब जाके रियलाइज हुई अपनी लाइफ में। लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है, बट हम जैसे लोगों को हम दोनों को मुझे लगता है कि मेरे लिए तो स्पेसिफिकली इसी साल ये सेल्फ अवेयरनेस आई है कि नहीं, मैं ना भी बोल सकती हूँ, ऑफ कोर्स, या मैं कर सकती हूँ किसी सिचुएशन में, मुझे जरूरत नहीं है खुद को पुश करके दूसरों को खुश करने की। So that's like a personal win. Yeah, so for me it was just in Jan 2022 only that something just really massive happened, and I think अगर मैं उससे grow out कर सकती हूँ, अगर उस चीज़ को मैं strongly मैंने उस चीज़ को अगर handle किया था, I think I can just do anything in life, and I'm just so proud of myself for that. Of course, it was my like self achievement, and then I bought my own camera from my own money, जिससे हम अभी shoot भी कर रहे हैं। I think this was also like the biggest achievement for me at this age, because I just started earning. I just completed. We just started earning, and if you're doing already इतना कुछ अपने लिए, तो I think उससे better तो कुछ हो ही नहीं सकता। Nothing could be more fancier than this. So let's do a fun question. What were your top 3 most favorite food items of 2022? Wow, food items. I would definitely, because we're foodie. We are foodies, are like big time. The first one was sultry noodles, dim sums. Yes, they were. It was just the most amazing dim sum that I've ever had in my life. For context, there is this restaurant here in Panchkula. If you ever visit Panchkula, do go to Sultry Noodles. It's at this place called Bella Vista. बहुत ही aesthetic जगह है, तो वहाँ पे मिलते हैं ट्रफल चीज डिमसम्स, तो वो हमने जो जाके खाए ना, बिल्कुल, मतलब I think we're going to have it next month also. हाँ, हम चलेंगे हम तब भी खाएंगे, and it's just so
मुंह में जाके जो मेल्ट होता है ना वो मतलब आई थिंक गोर में खाने के लिए ना वो अभी लाइक 400 के 4 हजम होते नहीं है बट those are like worth it. Exactly. And next would be when I went to Delhi, I went to Jama Masjid. I'm a non-vegetarian and she's a vegetarian, just for your context. But I had the best, you know, seekh kebab, I had chicken tikka, I had rumali roti, and I think वो मैंने अभी मतलब ईयर एंड पे ही खाया है क्लासिक. हाँ बट आई जस्ट कैन नॉट टेल यू, इट इज जस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल खाना है, बहुत ही ज्यादा यम. And third would be my OG Domino's. I'm a Domino's freak. Yeah. I eat Domino's almost every once in a week. I almost eat it. But Domino's is something, it's my core. Like I cannot get bored of Domino's. So I think Domino's also goes in my list. मैं बताती हूँ. बताओ. So my first thing is there is this place called 2020 fast food. Zomato पे डालोगे तो पंचकुला में आ जाएगा आपका. मैंने इतना खाया है, आई एम नॉट इवन किडिंग. एवरी थर्ड डे आई ऑर्डर फ्रॉम देयर, या मैं जाके खाती हूँ. इट्स वेरी नियर टू माई प्लेस. तो स्टीम मोमोज, कुरकुरे मोमोज खाने ही खाने हैं. मतलब मैंने वो पूरी दुकान का बहुत कुछ खाया है. परसों भी खाया था, मेरे भाई का बर्थडे था. I got money. It's very affordable. मतलब like Yeah, but it's very nice. But it's I've had that. इस पे खाया तो it's काफी अच्छा. Then there is crispy corns. I think this year, right at this moment, we have a plate of crispy corns right there. Exactly. That's the love. That's the love. क्या ही कर सकते हैं. And third thing, I feel like it's not a food item, but this year I got introduced to alcohol. Oh yes. Your mom is watching. Yeah, I know my mom is watching, but cocktails, I think it's something that I discovered this year, and I can't do hard drinking. I feel like I cannot, but cocktails is something, and I have gone gaga over it. I got introduced to cocktails from her. Yeah, मैंने इस साल बहुत cocktails try किए हैं, and उसमें से I feel like Sex on the Beach तो classic हो गई. Cosmo अच्छी लगती है मुझको. LITs are nice, but they're strong, so then we can. I think we should go to social and have their LIT one day. I've had it. It's very nice. I feel like these three things. Yeah. Okay, so the next question from my side, it would be, what were the top 3 perfumes that you liked wearing in 2022? I think मैंने अपने चैनल पे काफी परफ्यूम और सेंट ओरिएंटेड बातें करी हैं, तो लोगों को पता लग गया कि now that I like perfumes. But top 3, I think for sure it's Zara Femme. Yeah, I love it. हाँ, मजे ही आ जाते हैं. I love it. और उसके अलावा I have finished using the Bulgari Pink Omnia. वो मैं initial part of year पे use कर रही थी. Yes, Bitch got money. The thing is that मुझे इतने gifts मिलते हैं. She recently gifted me, a luxury perfume. She gifted me a YSL perfume. So yeah, guys, मुझे मिल जाते हैं ना gift, तो फिर मैं खुद लेती हूँ. प्यारी बच्ची है ना. तो Bulgaria Pink Omnia is very nice. I want to try बहुत that. अच्छा है. I'll make you sniff उसकी bottle. तो अभी मैं फेंकती नहीं हूँ bottle. And third, I think Bath and Body में मैंने Bahamas Mamas काफी use किया. That is a nice. It's a nice one. Yeah. So tell me yours. I think she's too much into perfume. Like she's mommy perfume. Exactly. From daughter perfume, she's mommy. I love perfume. So my top pick would be, I think, Zara's Apple Juice. Oh, Zara's Apple nice. Juice is like, it's it has changed my game. I just bought it, I think, 3 months ago, and I'm obsessed with that perfume. अभी सिर्फ इतना सा रह गया उस बॉटल में. You know, mom use it on a daily basis. But I think if any guy is watching this video, I think आपको किसी अपनी girlfriend, mom या friend को कुछ perfume gift करना, I think Zara's Femme and Zara's Apple Juice are my top picks. Like I would pick that एक heartbeat में. Like it's just the best fucking perfume. I think second would be this perfume from Victoria's Secret. It's their Bombshell collection. Oh. The basic Bombshell, nothing over the top. The basic Bombshell. I think I loved that perfume. I loved that perfume. And third would be, I think I'm just a little confused, but I would pick this one from Davidoff. It's their Cool Water, I guess. It's like a very basic fragrance, but I like it. मैंने summers में वो काफी enjoy किया. Cool Water men fragrance है. नहीं, women. उसमें men भी आता है, I guess. उसमें pink version भी आता है. Pink I've not tried. It's like the basic blue वाला bottle, and I think I really enjoyed using that perfume. So these are my top 3 picks, and I think all are good budget-friendly perfumes. Nice. So my next question is, did you have any new hobby, habit, skill, कुछ भी ऐसा नया हो, like
which was not in your routine? तुमने कुछ नया सीखा or like any new habit that you've picked up? Yeah, there was definitely. I started cooking. Oh, I am obsessed with cooking now. Like, let me just put it there. I love cooking now. I think cooking is my makeup se bhi zyada. I think cooking gives me more peace because obviously food makes me happy. I never thought that I'm such a big foodie. जब 2022 में मैंने ये realize किया मैंने बहुत खाया है यार. I've put on so much weight also. And I think I never knew that I can eat इतना ज़्यादा. So I think cooking would be my सबसे अच्छा एक hobby कि मैंने cooking सीखा. Like cooking was she cooks, she burns the food, then she tells me I've done my food. But actually she's quite good at particular things. Like वो होते हैं ना जो लोग जिनकी एक चीज famous होती है. तो I make good food. Like her garlic bread is to die for. It beats Domino's like ऐसे टक्कर पे. I feel like बहुत बढ़िया बनाती है. That is nice. Your hobby was I think shopping. Shopping. You're calling shopping a hobby? It's my routine. Like guys, routine. I just buy stuff. I regret them. FYI, if cult people are watching this video, sponsor her, make her a brand manager. The number of people she has gotten on the cult app. It's insane, guys. This is her cult only. Like ये अपना cult बना रही है उन लोगों का जो cult app use करते हैं. मतलब मैं I have stooped down so low. मैं अपने ऑफिस वाले लोगों का भी नंबर लेके उससे क्योंकि डिस्काउंट मिलता है यार 2000 का डिस्काउंट मिलता है तो I am just doing this. अब मैं I think रिश्तेदारों पे भी पहुंच जाऊंगी बहुत जल्दी. और ये दूसरों को भी बोलते हैं यूज करो यार. She is the biggest shopping freak. मतलब अगर ये तुम्हारी लाइफ में है, she will trigger your worst instinct when it comes to shopping because she will just tell you about stuff. So yeah, to conclude, like she's a very big shopaholic. My hobby is that एक तो मैंने swimming सीखी इस साल, ठीक है मैं जल परी बन गई हूँ. मैंने तीन महीना स्विमिंग की और उसके बाद मुझे लगता है कि अब बस मेरे को बहुत क्रेविंग होती रहती है कि मैं पानी वाली जगह जाऊं, पूल में जाऊं, बस पानी पानी पानी. और जिस हिसाब से यहाँ चंडीगढ़ में ठंड पड़ रही है और पानी को छूना मना है हमारे यहाँ पे फिलहाल. बट आई स्टिल लाइक इन माई हार्ट आई एम लाइक आई फील लाइक आई एम अ वाटर बेबी नाउ. कितनी मैं क्लीशे हूँ ना, मछली 2 महीने ऐसे में थी कि आई एम अ वाटर बेबी. Yeah, she is definitely. So I think that. So one thing that you have done this year to improve your mental health. Okay, I've done quite a few things. First was journaling. I bought a journal and I think that was the first journal of my own life. कभी भी नहीं journal खरीदी और डायरी भी नहीं खरीदी होगी because I was never that diary person who writes and never. I'm more of a phone के notes में लिखने वाला person. But I just thought कि उससे बहुत better हुआ. But I think मैंने वो habit छोड़ दी थी September में आके. like I gave up because I think मुझे वो चीज़ भी खुशी नहीं दे रही थी एक टाइम पे आके. I was like क्या हो रहा है इसको लिखने से. But I think ठीक था. मैंने उसमें अपने डायरी में ऐसे नोट्स बनाए हुए थे कि सम थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैंने क्या किसी के लिए किया है. तो वो इनर हैप्पीनेस थी बट सेटिस्फैक्शन नहीं थी. तो फिर मैंने एक हॉबी अडेप्ट करी सितंबर के बाद. वो था खाना खाना. मतलब वो मैंने इतना खाया कि अभी तक मैं रुक ही नहीं रही हूँ. आई थिंक दैट इज अ वेरी सीरियस थिंग दैट हैपेंड टू मी बिकॉज आई वाज नेवर दिस foodie. Like I would just used to eat a lot. Like I started eating a lot and yeah, I think these were like few things and I think going for a small walk would also like help me. She does. आंटी के साथ भी जाती है कभी. हाँ तो मैं walk करने चली जाती हूँ तो वो भी काफी better था. मेरे journaling really helped me. I think for me मैं चाहती थी मैं ना वैसे बहुत शुरू से बड़ी ऐसी सेल्फ अवेयर टाइप की रही हूँ that always in touch with my inner self and mental self. But आई फील लाइक आते हैं सबके लो मोमेंट्स. ऐसा मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है बिकॉज आई एम वायर्ड दैट वे कि मैं सोचती ही रहती हूँ कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ के बारे में एंड फिर मेरा वो जो सोचना है वो इन एक्शंस भी ट्रांसलेट होता है. लाइक ऑटोमेटिकली आई बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड अगेन आई थिंक मेरा पीस आता है जब डीक्लटरिंग होती है बहुत ज़्यादा. सो आई दिस ईयर स्पेशली आई मेड श्योर स्पेशली ये मेरा पहला साल था प्रॉपरली एक वैनिटी के साथ ऐसे जीना लाइक पूरे साल स्टार्टिंग में. इट्स द बेस्ट फीलिंग है. तो मैंने बहुत ज़्यादा डीक्लटरिंग करके रखी एंड लाइक सफाई मेंटेन करी. बट एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मैं योगा कर रही थी. फिर बीच में मेरा थोड़ा टच छूटा. थोड़ा बहुत होम वर्कआउट चल रहा था. देन लेटर ऑन आई स्टार्टेड विद स्विमिंग. सो आई फील लाइक टू फॉर द 80% ऑफ द ईयर मैं काफ़ी फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कर रही थी विच ultimately translated bringing mental peace and mental stability for me. and डायरी मैं पहले से ही रखती हूँ, यूज़ करती हूँ. so I feel like I didn't do anything special. बट बीच में मैंने कुछ टाइम थे जहाँ पे मैंने ऐसे मेडिटेटिव जो पॉडकास्ट होती हैं उसको यूज़ करके आई ट्राई डूइंग गाइडेड मेडिटेशन. सो आई ट्राइड दैट एंड इट डेफिनेटली हेल्प. Okay, so my next question would be like who or what had the biggest impact
on you in 2020? Okay, so for who, I feel like she and there's another good friend of mine, Nitin. I think these two people, these are the two new friends जो मेरे इस साल बने और जिनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है. नितिन आई नो फ्रॉम द लाइक पास्ट 4 years now, but this year we really like bonded and connected nicely. Same goes with her. I knew her for almost a year. मैं 2021 में इसको जानती थी. 2022 में मैंने इसकी एक आधी वीडियो देखी होगी, but I never like connected with her that way. But these two people have had the biggest impact on me this year, especially when it comes to teaching me a lot about adulting. And by adulting I not mean like material stuff ki bhai ye form kaise bharte hain, ye kaise karte hain, not that responsibility wise, but as a person I am naturally a giver, ठीक है, and I didn't know any boundaries to it. पता नहीं अब इसको ऐसे वर्ड्स में कैसे बोले, like मुझे बहुत फर्क पड़ता था कि सब खुश रहे मेरे आसपास. She's a people pleaser, not in a bad way, हाँ, people but in a good way. exactly. And I think that just gets you, like, you know, you need to stop, you need to do your own thing. You cannot make everybody happy at the same time, because even you have to live that moment by yourself also. बाउंड्रीज होनी चाहिए, मतलब आपका ना एक बाउंड्री होनी चाहिए, और वो शायद मुझे नहीं पता थी. बट दीज टू पीपल हैव डाटा भी है, इन्होंने मुझे प्यार से भी समझाया है. एंड आई थिंक व्हेन यू हैव दैट बॉन्ड, यू तुम्हें समझ भी आता है कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है. सो इन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है इस साल, एंड दैट हैज ट्रांसलेटेड इनटू मी बिकमिंग अ बेटर पर्सन फॉर माई सेल्फ ओनली, which was a very nice thing. And what had the biggest impact on me this year is that I think failures have taught me a lot. I have failed multiple times, not just in my CA वाला thing, but I feel like बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी लाइफ में, like your multiple attempts to come back in the content game and then failing, फिर वो inconsistency लेके आना. So I feel like पहले मेरा failure के साथ outlook और relationship बहुत अलग था, और आज की डेट में बहुत अलग. एक्चुअल में जो आपको आपका लोएस्ट पॉइंट सिखा के जाता है, वो आपका हाईएस्ट नहीं सिखाता आपको. So failure has taught me a lot, and it has impacted. And to accept that failure also, it's a big deal. सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, उसको सीखते तो बाद में हो. तो I feel like जब एक्सेप्ट किया तब सीखा भी. What is your answer? Who or what had the biggest impact on you this year, 2022? 2022 year was all about her and my mom. I'm not even kidding right now. It's not just हम साथ में वीडियो कर रहे हैं. I talk about बातें कर रहे हैं. ऐसा नहीं हम पीठ पीछे भी एक दूसरे की यही बातें करते हैं, because I think I have said this before also, when I gave up on friendship, she came in my life and I, you know, regained that trust कि हाँ यार दोस्ती, अभी भी दोस्त अच्छे लोग होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, आप दोस्त बना सकते हो फिर से. There is no age, there is no कि आपको अगर फ्रेंडशिप में ब्रेकअप मिल गया तो वापस लाइफ में ग्रो ही नहीं कर सकते. You can. So that was one thing. And even my mom, because I think with my mom my relationship has grown a lot in 2022. Like I'm so dependent on her. I think we have become the bestest friends, like best as friends forever. I can just share so much with her. I can be transparent. I always wanted that bond with my mom when I was growing, when I was in school, but you know I never had, because I was a very ganda bacha. I think mom के साथ में and Tanuja के साथ में I just share the most beautiful bond, and yeah, I would never give on these two people, because they are like my constant. I want them throughout all my life, and I know they will be. Highs and lows तो आते हैं relationship में, but how you deal with it is another thing. It is very important. Yeah, I think corporate life. Oh yeah. So, yeah, I'm a corporate slave. Corporate gal. Corporate gal, and it's been more than 1 year, 1.5 years, and I've switched jobs, and I've been thrown out of a job also just because I was not capable. They were like, you know, you are not matching with our expectations, and neither they were also not matching with my expectations. Let me put this clear, okay? तो नहीं, corporate life ने मुझे बहुत कुछ सिखाया life में. Life cannot be a cake ride. You will not, you know, want जो आपको चाहिए, आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा. आपको लोगों की सुननी पड़ेगी if you are in corporate life, and you have to fucking prove yourself every day. When I say every day, it means you have every to day. prove yourself every day. There will be deadlines. There will be people who will just come and yell at you. They'll also say sorry at the end if they are wrong. But I think it teaches you a lot. Corporate की image खराब है. Image खराब, but it makes you a better person. That is the part of adulting. Because they're paying you. You're not working there for free. तो अगर पैसे दे रहे हैं तो expectations तो वो करेंगे. Okay, moving on to the next question. So, what was your favorite place that you traveled to this year? हाँ, मैंने travel किया. I think I traveled a lot this year. Yeah. If I'm not wrong, I traveled to Agra. I went Shimla. I went Pune. I went to Pune. I cannot tell you. Pune gal. That
that trip just changed me. I didn't know कि मेरे में इतनी capability है, मैं अकेले भी travel कर सकती हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ. हाँ भाई अकेले गई थी. सब कुछ अकेले कर सकती हूँ. It was my office trip, obviously they paid for it. But I think that process, me going to Delhi, from Delhi से Pune से Hyderabad, I had my halt. I was there for I think almost 8 hours. I was alone at the airport and it was just too much. Like, let me tell you, those 2 days were the bestest days of my life. But also chaotic. Very chaotic. They were a mess. I think when I came back home, I was so sick for at least a week. I was literally dead. Processing. It was just, I think Pune is like the most beautiful city in India. I think it's बहुत underrated है, but Pune is like the most loving, warm, just so beautiful. I think लोग बहुत अच्छे हैं. एक बहुत ही अच्छा, I think metropolitan city है Pune. Pune people watching this video drop hearts. Yeah, exactly guys. I love Pune and I. ये हमारी mascot बन गई है Pune की. Pune, Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. So yeah, Pune was obviously the best trip ever. And for you, ma'am? And for me, yeah, I've traveled to 2 places. I went to Goa in Feb, and then I went to Fancy, and then I went to Haridwar, Rishikesh. August में गई थी मैं. But I think Goa was it for me. ठीक है, हो ही गया finally the quintessential. पूरी लाइफ हम गोवा जाने के लिए like जो हर ग्रुप रोता है गोवा and it was a girls trip especially, so yeah. I think बहुत महीनों में काफी कुछ. I was not there, FYI. हाँ, तब नहीं, तब मैं अपनी गर्ल गैंग के साथ गई थी. Overall I feel like एक गर्ल्स ट्रिप तो आपको करनी ही चाहिए लाइफ में. It's important. नहीं करी है तो कर लो. It's just so चाहे शिमला ही चले जाओ यार, कहीं भी चले जाओ, पर जाओ. The vibe of like 4 girls और एक जो लड़कियों के ग्रुप की vibe होती है ना, it's unmatchable. Like एक क्लास ब्रो, मतलब एंड गेम है, बस वही एंड गेम है. सो अगेन मैं भी वही वाली बच्ची हूँ कि घर वालों ने कभी अगर दुकान पे भेजना है तो छोटे भाई के साथ भेजना है. सो इट वॉज अ शॉकर कि उन्होंने भेज दिया, चले गए एंड इट वॉज अ ब्लास्ट. हमने प्रॉपर टूरिस्ट भी देखा. हमने like we were in North Goa, we didn't get the time. काफी रेज हुआ था इनका ट्रिप. We didn't get the time to go to South Goa, but it was so fun. भाई हम कसिनो गए. मैंने अपनी लाइफ में कभी बीच नहीं देखा था. मैंने फर्स्ट टाइम बीच देखा और वो जो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आती है, लाइक मेरे आंसू आ गए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. द ट्रिप वाज अमेजिंग एंड आई फील द सेम अबाउट ऋषिकेश. मतलब हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है और ऋषिकेश भी बहुत अच्छी जगह है. एंड इनिशियली मेरा ऋषिकेश को लेके जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वो बस ये था कि शिट इतना चलना पड़ता है, ये है वो है. बट बाय द टाइम, मतलब मैं 1.5 दिन रुकी थी, जब मैं वापस आने लगी ना, आई हैड दिस स्ट्रॉन्ग अर्ज. इवन अभी भी मेरे को था कि यू नो ऋषिकेश इतना अफोर्डेबल है, जाओ, जस्ट गेट लाइक अ नॉर्मल सी जगह पे रहो और बस 10 दिन वहाँ पे रहो. बस 10 दिन वहाँ पे रहो. क्यूट कैफेज में खाना खाओ, जाके गंगा किनारे बैठो, आरती अटेंड करो. इट्स जस्ट लाइक परफेक्ट. पता है वो क्या है कि वो पहाड़ भी नहीं है और वो प्लेन भी नहीं है. ठीक है, वहाँ पे रिवर भी है, वहाँ पे पहाड़ भी है, वहाँ पे सिटी वाइब भी, बिकॉज यू गेट कैफेज एंड लाइक बहुत ही हिप्पी वाइब. बट इट्स जस्ट इट्स वेरी, कैसे बोलूं, स्पिरिचुअल है. हाँ, हवा में ही स्पिरिचुअलिटी है. सो अगेन बोथ ऑफ दीज प्लेसेस आई वुड लव टू go back. Okay, so the next question would be like, what are your goals or expectations from 2023? Like, what are you up to? What am I up to? Okay, so first thing first, I'm hoping that in 2023 finally I qualify as a chartered accountant. She will, I know she will. ठीक है. Second thing is that I really want to take my content game to the next level. So definitely that, and I hope to touch 10k subscribers on YouTube in 2023. We're already a fan of 6k. Please, Janmashtami haters come back. Janmashtami haters come back. There is this video on my channel, ठीक है, उस पे Janmashtami what I ate in a day and the hate that I've gotten on that. Bro, it was the most funny video on It's so insane. You guys should watch it. Go watch read the comments. It's just insane and funny, and also read my replies. Conflict हो रहे भाई, दंगे, लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाइयाँ. Again, personally तो यार, I just really hope भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं वापस से योगा या फिर कोई physical activity करने लगूँ. Because it's hard to make that pace and again, ठीक है. I just want कि I continue with my yoga and और मैं और ज़्यादा self aware रहूँ. Bigger goals are CA बन जाऊँ और content अच्छा बन जाए, 10k subscribers हो जाए. तो what about you? My thing would be I cannot disclose on the channel yet, but yeah, she knows it and very close people know it that I want to achieve this goal in 2023. And उसके बाद में I think I want to
get another higher position. So right now I was a trainee, then I was an associate analyst, and now I want to become analyst. So analyst is the third position. So I'm aiming for that also कि इस साल तक मिल जाए वो position. And next thing would be obviously content game, because I find potential in me. मतलब इससे भी ज़्यादा laid back हूँ, तो I think I want to grow on that side also on Instagram, because मेरा goal था 2022 में Instagram पे at least 10k followers हो जाए, but वो नहीं हुआ. And then I realized that it's fine, followers count matter नहीं करता है, बट कभी कभी करता है. ठीक है, नहीं करता है. एक रेट ऑफ ग्रोथ तो होना ही चाहिए. एक रेट ऑफ ग्रोथ तो होना ही चाहिए कि चलो ग्रो करो, चाहे स्लो पेस पे करो. नहीं हो रहा है तो फिर तो दुख होता है. एंड YouTube पे I really want to hit 1k subscribers, and I think that will happen pretty soon. And next thing I think would be I want few collaborations. Oh, we are manifesting big brands collaboration. I think we will deliver that quality in our content. Exactly. Definitely brands will notice and brands. Where are you brands? दिल से manifest कर रहे हैं. So on a scale of 1 to 10 क्या rating दोगे आप 2022 को? क्या rating दूंगी मैं कहना चाहूंगी 6.5. straight up 6.5. सेफ खेलेंगे हम. सेफ है बिकॉज 5 का मतलब तो ये होता है कि अच्छा भी था बुरा भी था, बट आई वुड स्टिल गिव 1.5 एक्स्ट्रा कि ठीक है, मतलब हमें अच्छी चीजों को ज्यादा देखना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं 6.5 बोलूंगी. व्हाट्स योर रेटिंग? I think 7.5. I'll tell you why. So I made a checklist for 2022, and I think I ticked most of the numbers. I wanted a camera, I wanted a laptop, I wanted a permanent job in a good MNC, dream job I would say. I got that also. और मतलब बहुत सारी चीजें थी यार जो 2022 में मुझे मिली है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि my year was really bad. It was quite fine. मतलब it was a high, there was a high tide also and there was a low tide also. But अब मैं अगर obviously मुझे low को ही side पे करना पड़ेगा, तो I would rate it a good 7.5. Like it was not, मतलब it was bad, it was worse. There was a time when it was literally I was just falling apart. My life was falling apart. But then जैसे तनुजा just said कि अच्छी चीजों को ज्यादा acknowledge अगर हम करेंगे तभी तो वो चीज ठीक था. काफी accomplishments मिली हैं. You have a happiest day of 2022. ऐसे सोच रही हूँ बोला कि best day यार best तो मैं नहीं था. ठीक है, achievements हुई, काफी घूमे फिरे, ऐश करी, खाया पिया, but बेस्ट डे ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं नहीं बोल सकती बेस्ट डे. हाँ, बेस्ट डे मेरा एक था कि there was some money that I saved and my mom wanted Radha Krishna ji. Yeah. तो when I bought that for her, I think the happiness on her face. बहुत सुंदर मूर्ति है. मैं बता नहीं सकती. I have never been this happy in my life. Like that was I think the happiest and the proud moment. ये सारी materialistic चीजें तो साइड पे है, but I bought for her because उनको वो चाहिए था. तो I bought it for her and I think that was my happiest day. कि हाँ मैं उस दिन दिल से बहुत खुश थी because she was happy, like you know. तो I think it's very emotional, but that was my happiest day. For you? For me again ऐसे नहीं था कुछ भी. ऐसा नहीं था कुछ भी, बिल्कुल दुखी मत हो. नहीं मतलब ऐसे में बहुत सारे हैप्पी मेरे सरप्राइजिंगली मेरे ऐसे बहुत सारे दिन गए and all of them have been either with नितिन or either with वंशिका. मतलब कि जब हम लंचेस पे गए हैं एंड व्हेन आई केम बैक होम आई केम बैक विद दिस बिग स्माइल. एंड एक होता है ना कि आप घर आते हो ये सोच के कि यार कितना अच्छा दिन था. Exactly. कितना स्लीप ओवर्स. हाँ, मैं कितनी खुश थी. एंड जो हमारे स्लीप ओवर्स हैं, सो वो ऐसे जितने भी दिन हुए लाइक आई एम नॉट इवन लाइंग. और मुझे ऐसा नहीं पहले फील हुआ है. आई यूज्ड टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स, अच्छे दिन होते थे, बट एक for some reason पता नहीं इस साल में शायद I was more living the moment. 3.0 version of herself. हाँ, मैं 3.0 पे पहुंच चुकी हूँ. मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हुई एंड और उसके अलावा ऐसे मुझे कोई बहुत अच्छा मतलब अच्छे दिन थे. बहुत सारे दिन थे, अच्छे दिन थे. मैक्सिमम दिन जो थे वो मेरे फ्रेंड्स के साथ थे कंपेयर टू अगर मैं फैमिली से कंपेयर करूँ तो फैमिली से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स के साथ रहे वो ऐसे हैप्पी वाले डेज. उसके अलावा आई थिंक this thing I have to really mention. So I sent a package, like a gift package to my friend who lives in Canada, Vikas. You guys have seen him. अब तो बेचारा चला गया तो वो मेरे चैनल पे आता नहीं है. तो when he opened that gift, I think वो भी मेरे साल का one of the most happiest. The way he was smiling, the way he felt, एक दिल से. आई थिंक आपका हैप्पीएस्ट डे तब होता है जब आप किसी और को खुश कर सकते हो. मतलब तभी आपको इतना अच्छा फील होता है. पहले बचपन में अगर मुझे से 2 साल पहले कोई ये चीज मैं तो बोलती हूँ तो मैं बड़ा खुश थी. बट नहीं गाइस, जब आप किसी और को खुश करते हो, किसी और को खुशी देते हो, तो
बेस्ट फीलिंग होती है वो, बस वही बेस्ट फीलिंग होती है। आई थिंक वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन था। मैं आई वाज स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, और वो भी उतना ही हंस रहा था कि वो सो हैप्पी। और फिर मुझे भी महसूस हुआ कि लिविंग अवे फ्रॉम होम इज जस्ट सो हार्ड। आपको ऐसे कुछ घर से सामान आता है तो कितना खुश होता था, इमेजिन आपको दुख भी कितना होता होगा ना यार। सो दैट वाज दैट। सो ठीक है, नॉट येट। आई थिंक नेक्स्ट ईयर अगर मैं सीए बन गई तो मैं 100% मुझे लगता है कि वही मेरा हैप्पीएस्ट डे होगा। थोड़ा और हम इसको फन करते हैं। टेल मी योर टॉप 3 मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर 2022। फाइनली वी आर हियर। मेकअप बैक टू मेकअप। सी मैं वो नहीं बोलूंगी जो उसको पता ही है कि मेरा क्या है फेवरेट, बिकॉज वो मैं अब 2 साल से यूज कर रही हूँ तो उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। बट फेवरेट प्रोडक्ट वुड आई थिंक के ब्यूटीज पाउडर, their HD powder. I got introduced to that powder. That's literally the best powder. It's so good. Like if you have dry skin, that is the product for you, okay? And another product there's this palette from Gush that I recently discovered, and it's like a stack. You have blush, contour, highlighter. I think she will find one thing and then she will rant about it for months. Like I would say, like it's literally the best product. And I'm yet to buy it, but it's nice. बहुत मैं eager हो चुकी उसको खरीदने। It's really very nice. It's really nice. And another would be Maybelline's Dewy Primer. Oh my god, that primer is amazing, guys. Like बहुत टाइम लगा मुझे वो डिस्कवर करने में, बट मुझे लगता है मजे ही आ गए। लेकिन I discovered it through me, but I think वो बहुत अच्छा एक प्राइमर है जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए तो एक सेवियर है ही वो प्रोडक्ट। सो या मेकअप में I would say 3. And what about you? My top 3 products मुझे बोलने की जरूरत नहीं, but फिर भी I have this again mixed my top 3 Swiss Beauty concealers. I wanted to say that but I did not because I was like ठीक है यार कि बहुत गालियाँ, बट मैं फिर भी मैं दोबारा गाना चाहूंगी क्योंकि मैंने वही कंसीलर यूज करा है। ये वो इंसान बोल रहा है जिसके पास 10 कंसीलर है और वो कोई और कंसीलर नहीं उठा रही है, उल्टा उसी के नए नए शेड्स खरीद रही हूँ मैं, सो दैट मुझे हाईलाइटिंग शेड मिल जाए, मुझे कंसीलर मिल जाए, मुझे ब्रॉन्जिंग शेड मिल जाए, उसमें उसी कंसीलर से पागल हो चुकी हूँ। सो दैट इज दैट। माय सेकंड प्रोडक्ट इज अ O2O's लिक्विड ब्लश। स्टनिंग, अमेजिंग। आई थिंक नार्स का जो लिक्विड ब्लश आता है वो उसका ड्यूप है। जस्ट इट्स एवरीथिंग दैट यू वांट। I'm yet to try that. So fucking good. तो वो बहुत अच्छा है। एंड थर्ड आई थिंक मैंने इस साल लिपस्टिक्स जो है वो 2 ब्रांड्स की बहुत ही ज्यादा यूज की हैं। एक तो स्मैशबॉक्स की लिक्विड लिपस्टिक्स और दूसरा हुडा की ट्रेंड सेटर। मतलब ये 2 लिपस्टिक्स जो मैंने इन एंड आउट, समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं क्या हूँ यार, इतना सारा कुछ है। and I always go back to those, like वही 2 स्मैशबॉक्स की गुलाबे, स्टेपिंग आउट और एक और है ड्राइवर सीट और हुडा ब्यूटी की ट्रेंड सेटर। बस यही लगाती हूँ मैं, यही लगा के जा रही होती हूँ। तो कैसी कैसी विडंबना है। आई थिंक वी हैव स्पोकन अ लॉट एंड टू रैप दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू गिव यू वन लास्ट चांस, ओके माइक टू यू। व्हाट आर योर फाइनल थॉट्स ऑन 2022, 2023? Just wrap it up. हमको एक conclusion वाला आंसर दो। 2022 was nice. It was, I achieved a lot of things. I met the strongest version of myself. I dealt with a lot of emotions, physically, mentally. बहुत heartbreaks हुए, बहुत अच्छा भी टाइम आया, बहुत बुरा भी टाइम था. But I think it was fine, it was good. It just went बहुत too soon because I think I kept a record of this year. So that was good. हमें सबको एक record रखना चाहिए. It was pretty good. And 2023, I'm just coming to you and I'm very excited. I'm very thrilled. I want to achieve few things like so badly. Like I'm just a desperate bitch right now. Like desperate is the word for me right now. So I really want those things to happen in 2023. I want to reach bigger, like थोड़ा सा higher heights in life. So yeah, this would be my 2022 and 2023 expectations and wrap up. Okay, back to me, Mike. Thank you. So yeah, 2022 was I think it was everything that I did not expected and I wouldn't and now I can say I wouldn't have had it any other way. I think अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, बहुत कुछ सिखा के गया, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ. And I'm glad that it happened in the 23rd year of my life. I'm still like in my early 20s. So now I feel like जब तक मेरा 25th birthday आएगा तब तक I would have like grown and मुझे बहुत सारी चीज़ें और आई हैं इस साल, समझ खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, काम के बारे में, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी मैंने, बहुत जगह गई, बहुत चीज़ें खाई पी, घुमा फिरा, everything was so. It was chaotic, but I still love it. And for 2023, I just want to say that I'm coming for you.
Okay, receive me with open arms. Exactly, please. Okay? Receive us with open arms, and I have Such such high hopes. big expectations, such big Exactly. goals, and I'm not even afraid. पहले मुझे लगता था इतना नहीं सोचना चाहिए. Now I'm like, I'll aim high and I'll work hard enough to achieve those goals. And I hope that all of you take something positive from this video. और कुछ नहीं तो ये end note लेके जाओ कि जो भी हुआ भूल जाओ. आगे देखो, आगे के बारे में सोचो, and Don't stick to your past. wherever Move you on. are, you will get out of it and you will get big We things all in have the life. strength. It's just that हम acknowledge ही नहीं करते कि हम कितने ज्यादा capable और कितने strong capable हैं. हैं, exactly. हमें दूसरों को आके हमें बताना पड़ता है कि हम capable और strong है, but हमें खुद ही realize करना पड़ेगा. And I think be your own best friend. Internal validation. Yeah, be your own best friend and prioritize yourself. Prioritize yourself. Yeah, खुद को that is the importance दो. only thing I think जो हम दोनों ही बोलना चाहते हैं कि खुद को importance दो. Importance You दो. are the most important person in your Your life, in life. your Your story. main character. Main character energy all Only. over. And with that, it's a wrap on 2022 on this video. Thank you so much for इतना लंबा सुनने के लिए. ठीक है? Yeah. You're Boring my नहीं real था. G. It's not boring at all. Yeah, I was don't feeling a think bit so. nervous because इतने time बाद I'm filming a sit down video, but अच्छा लगा. And I hope you guys enjoyed watching this video. If you did, don't forget to like this video, subscribe to my channel, comment down below what more videos would you guys like to see from the both of us on her channel. Go subscribe And to we'll her see you channel. next time soon. And yes, we'll see you in 2023. See now, exactly. Yay! I'll see you guys next time in the next video. तब तक के लिए bye bye, ta-ta, and namaste. Namaste. 1, 2,